Good morning, students. How are you all? I hope you all are smiling as the shining sun. Students, in previous video we have learned about three neighborhood places. वो कौन-कौन से हैं? Very good. School, hospital and post office. So students, before starting today's topic, let's recap. School is the place where we come to study and play. Hospital is the place where sick or injured people come for treatment. Post office is the place where we post letters, buy postcard, stamps, envelopes, etc. Now without wasting any time, let's get started with a lovely rhyme. So students, hear how the rhyme goes. Police officers are great. They keep us super safe. In my neighborhood, all the people really good. Firefighters are nice. They fight fire all night. In my neighborhood, all the people really good. I love my neighborhood. So my dear students, have you enjoyed this rhyme? Yes, I have too enjoyed. Do you know, students, from this rhyme, what we have learned? Yes, so today we are going to learn about bank, police station and fire station. Now tell me, students, what do you know about bank? Have you heard the name of bank? Yes, very good children. Have you seen any bank in your neighborhood? Really? That's good. Now children, अब आप ये बताओ कि बैंक के बाहर या अंदर एक लंबी सी लाइन क्यों लगी एंड वो सारे लोग एक लंबी लाइन में क्यों खड़े रहते हैं? नो आइडिया? ओके, डोंट वरी, आई विल टेल यू. स्टूडेंट्स, वो सारे लोग अपने मनी को सेफ रखने के लिए बैंक में जाते हैं और जरूरत पड़ने पर विथड्रॉल कर लेते हैं, मींस पैसे निकाल लेते हैं. We can deposit money or take out saved money from a bank. They make money, withdraw easily. Students, deposit means put it and withdraw means taking out our money. Students, now these days most banks have ATMs. Do you have any ATM in your neighborhood? Now students, क्या आपने कभी इस तरह के व्हीकल को देखा है? और कहाँ देखा है? आपने इसे रोड पे देखा होगा. और कहाँ देखा है? Yes, very good students. पुलिस स्टेशन. तो ये भी आपको पता ही होगा कि इसे कौन से लोग यूज करते हैं? You are absolutely right. पुलिसमैन. तो क्या आपको पता है उस पर 100 क्यों लिखा होता है? ओहो, वेरी इजी. ये पुलिसमैन को कांटेक्ट करने का नंबर होता है. बट बी केयरफुल स्टूडेंट्स, इस नंबर को हमें सिर्फ इमरजेंसी में ही डायल या फिर कॉल करना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेबरहुड प्लेस इज पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन इज द प्लेस where police officer work. And do you know, students, what is the role of police officer? Police officer protect our colonies, home and neighborhood, as well as keep us safe from the people who have done something wrong. We dial 100 in case of emergency. You must have seen policemen guiding traffic too. They are called traffic policemen. They help to keep people safe from road accident and traffic jams. Now next neighborhood place is fire station. Have you seen a fire?
Then where have you seen? Okay, when your mother cooks food on the burner. But this fire is safe. लेकिन जब हम इसी फायर को किसी थिंग्स या प्लेस को बुरी तरह जलता हुआ देखते हैं तो हमें फायरमैन की जरूरत होती है आग बुझाने के लिए. So what we should do? We should call the fire station and the firefighter come with the fire engine. Firefighters put out fires using large water pipes and save people's life. Some neighborhoods also have sports clubs and places of worship, as well as petrol pumps. Neighborhood places make our life comfortable, so we must not litter in the places and help to keep them neat and clean. So students, today we have learned three major neighborhood places, which are bank, police station and fire station. Now students, it's time to see what we have learned through practice time. Take the correct options. Where do we keep our money safe? That means हम अपनी मनी को कहाँ सेफ रखते हैं? स्कूल में, हाउस में या बैंक में? The correct option is bank. Next is who protects our colonies, home and neighborhood? That means हमारे colonies, home and neighborhood को कौन protect करता है? Doctor, policeman या nurse? Correct answer is policeman. Next is who put out fire using large water pipes to save people's life? That means वो ऐसा कौन सा पर्सन है जो बड़े बड़े वाटर पाइप्स की हेल्प से फायर को बुझाता है और लोगों की जान बचाता है? आपके ऑप्शंस हैं पुलिसमैन, टीचर या फायर फाइटर्स. करेक्ट आंसर इज फायर फाइटर्स. लास्ट एमसीक्यू इज नेबरहुड प्लेसेस मेक आवर लाइफ डैश. तो आपको ये बताना है कि नेबरहुड प्लेसेस हमारी लाइफ को क्या बना देते हैं? कंफर्टेबल एंड इजी, डिफरेंट या फिर डिस्टर्ब? द करेक्ट आंसर इज कंफर्टेबल एंड इजी. स्टूडेंट्स, now pick up your EVS book and open page number 41. After that, write down all these exercises in your book. Let's try to understand. Fill in the blanks using the correct options. Now students, आपको करना क्या है? दिए गए ब्लैंक्स में आपको ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके इसे फिल करना है. A part is neighborhood has dash. That means neighborhood के पास क्या क्या होता है? That means neighborhood में क्या क्या होता है? Lots of houses only या फिर many houses, park, market, etc. Next is in a hospital the dash help the sick people. हॉस्पिटल में कौन sick people की हेल्प करता है? सब डॉक्टर्स या फिर डॉक्टर्स एंड नर्सेस दोनों? C part is a dash has fire engines and firefighters. अब इन दोनों में से किसके पास फायर इंजन्स और फायर फाइटर्स होते हैं? फायर स्टेशन के पास या फिर पुलिस स्टेशन के पास? नेक्स्ट इज नेबरहुड प्लेसेस मेक आवर लाइफ डैश. आपको ये बताना है कि नेबरहुड प्लेसेस हमारे लाइफ को क्या बना देते हैं? डिफिकल्ट या फिर कंफर्टेबल? That's it for today, kids. I hope you all have understood the concept very clearly. So now it's time to leave. See you in next video with the new topic. Till then, keep learning, keep watching your EVS videos. Thanks for watching. Bye bye.